Hello friends, welcome to Power Electronics class. In this session, I will discuss forward conduction mode of SCR. In last session, I have discussed forward blocking mode of SCR. First of all, I will recall it. In forward blocking mode, only a very small forward leakage current will flow from anode to cathode in order of microampere to milliampere. That current is approximately equal to 0. That's why in forward blocking mode SCR was off. In forward blocking mode, a small forward leakage current in range of microampere to milliampere will flow from anode to cathode. Very small. That's why SCR will off in this mode. तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में a small leakage current will flow from anode to cathode, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0 होती है. इसीलिए SCR इस मोड में ऑफ की तरह बिहेव करता है, दैट इज ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है. अगर मैं बात करूं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड की, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड ऑफ SCR. When SCR is in forward bias condition, it can go into forward conduction mode by following techniques. When SCR is in forward biased condition, it can go into forward conduction mode by following techniques. अगर हम एनोड टू कैथोड वोल्टेज को फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा कर दें तो SCR हमारा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में एंटर कर जाएगा. इफ एनोड टू कैथोड वोल्टेज ग्रेटर देन फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, SCR will enter into forward conduction mode. By applying gate drive, by using positive gate current or pulse between gate and cathode, we can turn on SCR. अगर हम पॉजिटिव गेट करंट या पल्स
गेट और कैथोड के बीच में अप्लाई करते हैं तो SCR हमारा इंटर कर जाएगा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड पे। और if dV by dt exceeds a permissible value, then SCR will enter into forward conduction mode. I will discuss later on in deep. If dV by dt exceeds a permissible value, then SCR will turn on. This dV by dt is voltage applied between anode and cathode. Or if gate cathode junction is exposed to light, then SCR will get turned on. Gate cathode junction exposed to light, SCR will get turned on, etc. अगर हमें SCR को टर्न ऑन करना है तो ये डिफरेंट टेक्निक्स है जिसकी हेल्प से हम लोग SCR को ऑन कर सकते हैं। अगर मैं इसमें से पहला मेथड यूज करता हूं, नाउ वी आर डिस्कसिंग फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में SCR मस्ट बी फॉरवर्ड बायस्ड। SCR must be forward biased. If anode to cathode voltage increases, voltage gradient also increases. वोल्टेज ग्रेडियंट भी क्या करेगा, also increase करेगा। अगर एनोड टू कैथोड वोल्टेज की वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन और इक्वल टू फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज, तो करस्पॉन्डिंग टू दिस वोल्टेज ग्रेडियंट इतना हाई हो जाएगा कि ये डिप्लीशन लेयर को ब्रेक कर देगा। इस वोल्टेज पर डिप्लीशन लेयर विल ब्रेक। अगर एनोड टू कैथोड वोल्टेज को हम इतना बढ़ा दें कि उसका मैग्नीट्यूड अगर फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज से ज्यादा हो जाए तो डिप्लीशन लेयर क्या कर जाएगी, ब्रेक कर जाएगी। दैट इज देयर विल बी एवलांच ब्रेकडाउन इन डिप्लीशन layer. And all three junction will be in forward biased condition. J2 junction भी अब forward biased हो जाएगा। J2 junction will also in forward bias
condition. फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में J1 जंक्शन J2 जंक्शन ऑलरेडी ही फॉरवर्ड बायस था, लेकिन फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में जब हमने एनोड टू कैथोड वोल्टेज को फॉरवर्ड ब्रेकर वोल्टेज से ज़्यादा किया तो J2 जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आ गया और देयर विल बी एवलांच ब्रेकडाउन इन डिप्लीशन लेयर. Depletion layer will vanish. So a large current will flow from anode to cathode and SCR will get turned on. SCR will get turned on. So there will be avalanche breakdown in J2 junction. Since all junctions, that is J1, J2 and J3 will be in forward biased condition, a large current will flow from anode to cathode. This implies that SCR will get turned on. Or if we apply positive gate current between gate terminal and cathode, SCR can also get turned on by applying positive gate current, that is IG must be positive, between gate and cathode. This is known as gate drive. SCR will on. गेट ड्राइव की हेल्प से भी हम SCR को ऑन करते हैं और जनरली हम लोग गेट ड्राइव ही यूज करते हैं SCR को ऑन करने के लिए. जनरली गेट ड्राइव this method is used to turn on the SCR. That is SCR को फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में ले जाने के लिए हम लोग गेट ड्राइव सर्किट का यूज करते हैं. So, if I apply positive current between gate and cathode, SCR will enter into forward conduction
is P layer, this is N layer, this is P layer, this is N layer. This is gate terminal, this is anode terminal, this is cathode terminal, this is supply, SCR is in forward biased condition and a supply is connected between gate and cathode. This switch will be closed. This is gate drive circuit. Now positive current can flow between gate and cathode. J1 junction was forward biased, J2 junction was reverse biased, J3 junction was forward biased. J1 junction forward biased, J3 junction forward biased, and J2 junction was in reverse biased condition. As we know that there will be a depletion layer around J2 junction. In depletion layer, there are no free charge carrier, only immobile ions will present. This is your depletion layer. In N layer, in N-type semiconductor, electrons are majority charge carrier. These are the electrons. In N layer, electrons are majority charge carriers. These are the electrons. In P-type semiconductor, holes are majority charge carriers. These are the holes. In P-type semiconductor, electrons are minority charge carrier. These are the electrons. In N-type semiconductors, holes are minority charge carrier. अगर हम एक पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट करते हैं गेट और कैथोड के बीच में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि गेट टर्मिनल इस गेट ड्राइव सर्किट के
पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो गेट टर्मिनल will be positive because it is connected to positive supply of gate drive circuit. कैथोड पर माइनस पोलैरिटी है, तो ये पॉजिटिव पोलैरिटी गेट टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी। इलेक्ट्रॉन पे कैसी चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और कैथोड पे कैसी पोलैरिटी है? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव पोलैरिटी इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी। इलेक्ट्रॉन पे कैसी पोलैरिटी होती है? नेगेटिव। कैथोड पर कैसी पोलैरिटी है? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव पोलैरिटी कैथोड की इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी। तो इलेक्ट्रॉन will move away from this cathode terminal. And these electrons from outer layer will be attracted by this positive gate terminal. बाहर की लेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसे पॉजिटिव गेट टर्मिनल अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। होल्स पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो ये गेट टर्मिनल इन होल्स को रिपेल करेगा। ये गेट टर्मिनल इन होल्स को रिपेल करेगा। सो होल्स विल मूव अवे फ्रॉम गेट टर्मिनल एंड विल बी अट्रैक्टेड बाय कैथोड। सो इलेक्ट्रॉन विल मूव away from gate terminal and attracted by negative polarity of cathode. These holes will move towards cathode. So electrons and holes are in motion. Electron will move towards the gate terminal and holes will move towards the cathode terminal. While attracting towards the gate terminal, some of electron will enters into depletion layer. जब इलेक्ट्रॉन रिपल होगा कैथोड के कारण और अट्रैक्ट होगा गेट टर्मिनल के कारण, तो जो बाहर की लेयर है, एन लेयर है, जब ये गेट टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इंटर कर जाएंगे डिप्लीशन लेयर पे। जब इलेक्ट्रॉन्स आउटर लेयर से गेट की तरफ मूव करेगा तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इंटर कर जाएंगे डिप्लीशन लेयर में। सो नाउ देयर विल बी फ्री चार्ज कैरियर will available in depletion layer while attracting towards the gate terminal, because gate is attracting the electrons. So there will be availability of free charge carrier in depletion layer, and depletion layer will vanish because there will be avalanche breakdown in this depletion layer. And hence
SCR will get turned on due to this positive gate current. तो SCR क्या हो गया बेटा? ऑन हो गया with the help of gate drive circuit. So if we apply positive gate current between gate and cathode terminal, the gate terminal will becomes positive. Since cathode terminal is negative, it will repel the electrons and attract the holes. कैथोड पे नेगेटिव पोलैरिटी है, इसीलिए आउटर एन लेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स है ये रिपेल्ड होंगे इस कैथोड के कारण. और गेट टर्मिनल कैसा है? पॉजिटिव है. गेट टर्मिनल पॉजिटिव है. So gate terminal will attract the electrons from outer N layer. It will attract the electrons from outer N layer and it will repel holes. होल पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. तो गेट टर्मिनल होल को रिपेल करेगा तो होल कैथोड की तरफ मूव करेगा और गेट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन आउटर एन लेयर से गेट की तरफ मूव करेगी. While attracting, जब ये इलेक्ट्रॉन्स आउटर एन लेयर से गेट टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएंगे इस डिप्लीशन लेयर में. While electrons attracting towards positive gate terminal, some of electrons will enters into depletion layer
and there will be avalanche breakdown in depletion layer. This implies that depletion layer will vanish or finished. जब ये डिप्लीशन लेयर ब्रेक कर गई, so all three junctions will be in forward biased condition. Therefore, due to vanish of depletion layer, all three junctions will be in forward biased condition and SCR will get turned on or enters into forward conduction mode. So large current will flow from anode to cathode because depletion layer will break. A large current will flow from anode to cathode. And SCR will get turned on. depletion layer क्या हो चुकी है? ब्रेक हो चुकी है. एनोड पे कैसी पोलैरिटी है? पॉजिटिव. एनोड पे कैसी पोलैरिटी है? पॉजिटिव. और होल पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. तो ये पॉजिटिव पोलैरिटी एनोड की इन होल्स को रिपेल करेगी. होल पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव. एनोड पे कैसी पोलैरिटी है? पॉजिटिव. तो ये पॉजिटिव पोलैरिटी ऑफ एनोड विल रिपेल दीज होल्स. So hole will move away from anode and these holes will be attracted by cathode having opposite polarity as compared to holes. So hole will move from anode to cathode. इलेक्ट्रॉन पे कैसी पोलैरिटी होती है? कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज. So these electrons will repelled by cathode due to opposite polarity and move away from cathode and will be attracted by positive polarity of anode. So electrons will move from cathode to anode and hole will move from anode to cathode. Holes will be repelled by anode and move from anode to cathode. And electron will be repelled by
cathode and attracted by anode. So electron will move from cathode to anode. Holes will move from anode to cathode. And electron will move from cathode to anode. As we know that the direction of current taken opposite to the flow of direction of electron. As electron is moved from cathode to anode, so current will flow from anode to cathode. A large current will flow from anode to cathode. Once SCR get turned on by positive gate current, we will switch off the gate drive circuit. To reduce the unnecessary loss. So positive gate current will turn on the SCR. As SCR gate turns on, the positive gate current should be switched off. In next session, I will discuss the reverse blocking mode of SCR. And further, I will discuss the various techniques used to turn on the SCR.